भाइयों और बहनों, आज संविधान पीठ के दो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से सब अपने निष्कर्ष लिखे हैं कारणों के साथ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि व्हिप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि माननीय स्पीकर को तुरंत निर्णय करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय तो एक ही हो सकता है। उन्होंने व्हिप का अस्वीकारिता की, लोगों ने, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। तो जब आपने व्हिप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और इसी से न्याय होगा, सत्य की विजय होगी। जहां तक एनसीटी का सवाल है, एक ऐसी सिचुएशन, और ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, कल कांग्रेस होगी, आज आप है, कल बीजेपी होगी। आपने दिल्ली को ये स्वरूप दिया जिससे वहां स्वायत्व हो, यहां पर ऑटोनॉमी हो। आज स्वायत्त और दिल्ली की विजय है। दिल्ली के हर उस तौर तरीके से जिसमें केंद्र सरकार ने गलत रूप से हस्तक्षेप किया है, उसको निरस्त किया गया है इस निर्णय द्वारा। और इसमें हर पक्ष में कोई सिंगल ऐसा पक्ष नहीं है, मुझे सौभाग्य था इसका दलील करने का, और कोई हमारा ऐसा पक्ष नहीं है जिसको मना किया गया हो। मैं समझता हूं कि जो सर्विसेज हैं, जो यहाँ के काम हैं, अब बिना अवरुद्ध होने के, बिना उल्लंघन के, बिना विलंब के, बिना तू मैं आरोप प्रत्यारोप के जल्द होंगे, क्योंकि इसका फायदा है नागरिक दिल्ली का। फ्रेंड्स, I'll very briefly tell you in English, this is a historic day, two major judgments of the Constitution Bench, very detailed, very organized, indexed with conclusions. As far as Maharashtra is concerned, every major substantive finding has been in favor of the side we were representing. The governor's decision is wrong because it is based on irrelevant considerations. The speaker's recognition is of the wrong whip. The whip has to be by a political party, not a legislature party, etc., etc. Now, it is true that the Honorable CM at that time resigned before the floor test, and therefore he has been denied relief. But the point of the matter is different. The point is there is a specific direction that disqualification petitions pending must be decided expeditiously. I want to ask myself, as a student of law, the Honorable Speaker must necessarily decide the disqualification petitions by holding these persons to be disqualified for the simple reason that they have acted contrary to a whip. The whip is of the political party, not the Eknath Shinde faction in the legislature. And if that whip is violated, how is it that for one day the Honorable Speaker can delay that decision? I think it's a victory for the people of Maharashtra. It's a victory for justice. It's a victory for the Constitution. It's a victory for the sovereignty of the legislature, its elected representatives, the 10th schedule. We hope and trust that the Speaker will not delay because of partisan political reasons and will decide very quickly. As far as NCT is concerned, it is an even more significant judgment. It is ultimately a victory for Delhi, for autonomy. You made Delhi for what reason? You made Delhi with autonomy because you wanted to give it a status. It is not merely a union territory. It is a union territory with a special constitutional status not available to other union territories. Now this judgment on every count, has made it clear that barring the 3 prohibited excluded areas, in all other areas, the LG must act on the aid and advice of the state government. I hope and trust
that the unnecessary pinpricks, and this is not about party A or party B. Tomorrow the BJP may be in power in Delhi and not in the center. Tomorrow the Congress, tomorrow the AAP. It is a victory for Delhi, because if the central government unnecessarily pokes its nose, delays matters, obstructs matters, creates a daily situation of argument and counter-argument, then who suffers? The people of Delhi suffer. This is a judgment in favor of the people of Delhi, and I welcome every legal count of it. That legal count is constitutional, it is reasoned out, and we hope and trust that all such over-adventurous legal acrobatics as practiced by the central government in the NCT case will not recur. So if you may just ask one question, if the Maharashtra matter, the Nabam matter has been referred to the larger bench, what does that mean legally and politically? It means nothing except that that matter will be reconsidered by 7 judges. The issue will be reconsidered is whether, if in anticipation of a possible disqualification of you, to prevent the disqualification of your clearly illegal act, give a notice to the speaker, I am the speaker, and you put me under a cloud, will the disqualification proceeding stop? The court has said this should be decided by 7 judges, that's all. And but would this have an effect? We had asked for it. Maharashtra We had asked for it. state? Obviously it will have an effect across the country, but the point is Maharashtra decision has been given separately, irrespective of when the Navam Rebia matter is decided. The learned speaker must decide disqualification petitions pending before it immediately. And I think there is no other result possible in the disqualification petitions which are based on you disobeying my whip. Now, if my whip is valid, there is nothing except the act of disqualification which you must incur, and the speaker must do so. So one more question. कोई इन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है उच्चतम न्यायालय ने कि उसका रेफरेंस का इस निर्णय से कोई मतलब नहीं है, वो रेफरेंस भविष्य के लिए है। इस निर्णय के लिए उन्होंने आदेश दिया है कि माननीय स्पीकर तुरंत जल्द से जल्द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन निर्णित करें, बल्कि यहां तक भी बोला है कि ईसी के पेंडेंसी के कारण भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को रोकने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर आप स्पीकर हैं और आपको ये आदेश है उच्चतम न्यायालय का, तो आप उस डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन में जो लंबित है और क्या निर्णय ले सकते हैं सिवाय इसके कि मैं डिस्क्वालिफाइड हूं? क्योंकि अगर मैंने विप का उल्लंघन किया है तो निश्चित रूप से मैं डिस्क्वालिफाइड हूं। विप आज होल्ड कर दी गई है कि पार्टी की विप होती है, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी की, न कि विधायिका पार्टी की। तो मैं समझता हूं कि इसमें कुछ बचा नहीं है। So just one more question, sir. Now that because the governor and the speaker have both been put under question, but the court also said that Mr. Uddhav Thackeray resigned of his own free will. I've already answered that. That is not the issue at all. Uddhav Thackeray established a principle. I am saying the disqualification must now follow as day follows night and as night follows day. And if these people are disqualified, what is the government? Secondly, what is the moral right of this government to continue for 1 minute more? Findings against your governor, findings against your speaker, findings against your wrong actions, findings against the recognition of the whip, findings against the political party mistake you made about the whip. Then what is every moral, political, emotional, legal ground is held against you? It's a different matter that he has not been restored. That doesn't matter. If the disqualification petitions are decided according to law and there can be only one result in view of the whip decision, then all these MLAs are disqualified.